Okay, dear students, we are starting with the lecture with the topic national income measurement with the help of expenditure method. And as you are aware of the fact, there are three methods: value added method, income method, and expenditure method. First two methods we have already discussed, right? And today we will be starting with the third method, that is known as expenditure method. One more thing I want to make it clear here: whether you are using value added method, income method, or expenditure method, the result, the calculation of national income will be same. चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड यूज कर लो, इनकम मेथड यूज कर लो, और एक्सपेंडिचर मेथड यूज करो, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट कर होके आएगा वो सारे मेथड से सेम होना चाहिए. इफ इट इज नॉट सेम, देन दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर आर सम मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन, राइट? So let us start with expenditure method. Okay, so expenditure method, what we do in this method? In this method, we calculate factor income earned by factors of production, and that the producers spend money on the purchase of factor services. As you know, there are four important factors of production. What are those? What are those? Land, labor, capital, and revenue. Okay. So after earning the factor income, what the factors do? The factor owners do with that money. Factors start spending, the landowner or the capital owner or household sector, what they do, they start spending. So that's what written here: factor income earned by factors of production is earned in the form of expenditure on purchase of goods and services produced by firms. As you can recall, while we took circular flow of income, on the one side we had household sector and the other side firms. So with the help of factors of production, firms produce goods and services, and the firms make payment to household sector, and that payments become the income of household. And the same income the household sector spend on the purchase of goods and services produced by firms or companies. So, but it is in the economy, it is not only the household sector, there are several other sectors, you know. So, all the expenditure will be counted in. So, let us see here what are the different steps further. This method measures national income as sum of total final expenditure. In this method, what we do, we add up all the final expenditure. By whom? You can see household sector, business firms, government, and foreigners. So basically, we have four components, four spending entity: हाउसहोल्ड सेक्टर, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स. ये चार होते. फिर क्या करना है आपको? दिस टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस. जो भी एक्सपेंडिचर किया इन चारों एंटिटी ने, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स ने, उस सबको ऐड करते हो अगर आप, तो वो ही आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल के आता है. ओके, इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. okay, fine, fine. This method is also known as income disposal method. As you have seen, value added method is also known by some other names.
income method. In the same way, expenditure method is also known by this name, income disposal method. Okay, moving on to the next. Now we will see various components of final expenditure. What we do in this expenditure method, we add up all the final expenditure by all entity in the economy. So for that you need to identify what are different final expenditure by different entity. अलग अलग जो एजेंट्स हैं इकोनॉमी के अंदर, उसके थ्रू एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसका फाइनल एक्सपेंडिचर को सारा ऐड करना है. तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट कंपोनेंट हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको पीएफसीई शॉर्ट में लिखते. एंड इट इज incurred by household private non-profit institutions. Non-profit institutions, that means firms को यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं हम. सर्विंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं. कंज्यूमर गुड्स में बी ड्यूरेबल गुड्स, इट मे बी सेमी ड्यूरेबल goods, it may be non-durable goods and services, but we don't include houses. expenditure on houses, purchase of house, उसको हम इसमें include नहीं करते. that is not consumption expenditure. While calculating national income with the help of expenditure method, we don't include this consumption, right, in private final consumption expenditure. So let us see in detail now. PFCE, what are the components? Household final consumption expenditure, this one, first one. Second one, private non-profit institutions serving household sectors final consumption expenditure. सो दो कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है. एक तो हाउस होल्ड सेक्टर का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड सेक्टर. नॉन इंस्टीट्यूशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन सिंपली, राइट. जैसा नॉ एनजीओज का नाम सुना आपने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब क्या है? नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन होते हैं, एंड दे वर्क फॉर पीपल. पीपल के लिए. कोई some are doing for old age people, some are doing for children, some are doing for poor people, some are doing for orphans. Like that they spend money, right? These non profit institutions. Okay, is this clear? Yeah. Now, second component here under the same heading, PFCE, private final consumption expenditure, includes expenditures incurred by normal residents. Normal residents, whether in domestic territory और अब्रॉड. मतलब जो सपोज इंडिया का हम एग्जांपल लेते, तो इंडियंस इसका फाइनल एक्सपेंडिचर काउंट होता है. नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के वो है जो इंडियंस है, वो एक्सपेंडिचर चाहे तो इंडिया के अंदर करे या अब्रॉड करे, दुबई फेस्टिवल में जाके परचेज करके आ जाए, तो वो भी एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा और वो काउंट होगा, बिकॉज दैट इज अर्नड here in India. So any expenditure incurred by residents during their foreign tours and travel will be added in PFCE. ये ध्यान रखना है आपको. ऐसा नहीं कि कंट्री के बाहर एक्सपेंडिचर हो गया तो वो काउंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो काउंट होगा. बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, एनी एक्सपेंडिचर incurred by नॉन रेसिडेंट्स एंड फॉरेन विजिटर्स इन डोमेस्टिक मार्केट will be deducted. क्योंकि उनकी जो अर्निंग है, उनकी जो इनकम है, वो यहाँ की नहीं है, एनआरआईज की. इधर अर्न किया नहीं है उन्होंने. उन्होंने किधर अर्निंग की? बाहर अर्निंग की. फॉरेनर्स तो बाहर के है ही, तो उनकी स्पेंडिंग जो है वो काउंट नहीं होगी. राइट? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay, fine. So move on to the next part. The second component of expenditure. First, what was private consumption, final consumption expenditure. Now the second one is
government final consumption expenditure. Government is also one of the consumers besides the household sector. So it refers to the expenditure earned by general government. वो गवर्नमेंट क्या हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज हो सकती है. गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. डिफेंस पे कर रहे हैं, लॉ पे कर रहे हैं, एजुकेशन पे कर रहे हैं, है ना. So all these expend government produces goods and services with the aim of social welfare without any intention of earning profit. So यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को काउंट करना है, एक्सपेंडिचर पार्ट को करना है, इन्वेस्टमेंट पार्ट को नहीं काउंट करना है, ओनली एक्सपेंडिचर पार्ट को काउंट किया जाएगा ये सेकेंड कंपोनेंट में, राइट. So this is our second expenditure incurred by any government will be included in national income while calculating national income by expenditure method. Okay, moving on to the third component, very important component, that is gross domestic capital formation. Capital formation simply means investment. Gross capital formation, domestic capital formation, and gross investment. It refers to addition to the capital stock. जो भी capital stock available है इकोनॉमी के अंदर, जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, capital stock enhances your production capacity, right? So what are the change taking place in the capital stock? What addition is happening? That is included here, and it represents expenditure incurred on acquiring goods for investment, not for consumption, but for investment by the production units located within the domestic territory. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर अगर गुड्स, कैपिटल गुड्स अक्वायर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको इंक्लूड किया जाएगा जीडीसीएफ में या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर. अंडर दिस वी हैव फर्स्ट कंपोनेंट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट. जो भी फिक्स्ड एसेट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मशीन से फिक्स्ड एसेट, इक्विपमेंट, यू नो, बिग मशीनरी, असेंबली लाइंस, राइट, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं वहां पे लगाए जाते हैं. अभी इस कंपोनेंट को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. नंबर वन इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट. जो बिजनेसेस है, जो कंपनीज है, उसका एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, जैसा मैंने अभी कहा आपको. तो ये फर्स्ट ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा. दूसरा ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. जो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होते, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रहे, राइट, जिसको हमने कंजम्पशन वाले में एक्सक्लूड किया था, यहाँ पे इंक्लूड हो रहा, बिकॉज दैट इज इन्वेस्टमेंट, राइट. सो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय हाउस होल्ड. चाहे तो हाउस होल्ड खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सेल्फ कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, या बिल्डर्स के थ्रू हो रहा हो, एंड नाउ यू आर बाइंग इट, that is also included in this second component, right? Is this clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, very good. Okay, if you have any doubt you can ask me, right? Third component is gross public investment. Public investment means investment by the government, right? And it includes expenditure on construction of roads, flyovers, bridges, right? All those investment expenditure on infrastructure, you know, the which enhances the capacity, which enhances the infrastructural facility in the economy, that may be related to power sector, irrigation sector, science and technology development, banking sector. जहां भी इन्वेस्टमेंट हो रहे गवर्नमेंट के जरिए से, गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम
ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में काउंट कर लेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट third component. There is one more so component, that is इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. आफ्टर दैट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक है, प्रोड्यूस तो हो गया, वो सेल नहीं हुआ, वो स्टॉक में रह गया, तो जो चेंज इन स्टॉक हो जाता है उसको भी कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट समझा जाता है उस ईयर के लिए. सो इट रेफर्स टू फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स जो यूज हो रहे, जो अभी तक यूज नहीं हुए कंप्लीटली, वो इन द प्रोसेस है स्टॉक में. सेमी फिनिश गुड, finished goods lying in the stock go down with the producers, right? That is part of change in stock or inventory investment, but not used for करंट कंजम्पशन. करंट कंजम्पशन में अभी तक यूज नहीं हुआ है, वो गोडाउन में अवेलेबल है, प्रोड्यूसर्स के पास अवेलेबल है, तो उसका डिफरेंस कैलकुलेट करते क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, you will get the this change in stock. So it means what are the components now? You can see in GDCF, gross domestic capital formation के अंदर क्या क्या आ जाएगा? gross fixed capital formation आ जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, राइट? और ग्रॉस, इसको पूरा अगर आप ऐड करो, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. सो बेसिकली जीडीसीएफ के अंदर 4 कंपोनेंट आ जाएंगे आपको, राइट? इट इज देयर ऑन द स्क्रीन, right? Is this clear, students? In the third component of expenditure method, what? Yes, sir. Okay, fine, very good. Moving on to the next, fourth component in expenditure method. Number one, here net export, we call it net export. Net export is calculated by deducting import from export, x minus m. In economics, it is a traditional notation. Export is denoted by x and import is denoted by m. So difference of this is nothing but net export. So this is also calculated for the year. So what let us see what exports means. Export refers to expenditure by फॉरेनर्स. इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुआ कुछ, उसको फॉरेनर्स परचेज कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम कंट्री के बाहर, right? The exported goods have been produced within the country's domestic territory, so they are included in the output of the economy. Whereas import, which are produced outside the country, outside the domestic territory of economy, and we are importing it, that is इंपोर्ट. ठीक है, तो उसका डिफरेंस जो है, आप सिंपली जैसा मैंने पहले कहा, आप डिडक्ट कर दो. आप ऐसा लिखने के बजाय डायरेक्ट हम क्या लिखते, नेट एक्सपोर्ट लिखते, यानी तो पहले आप एक्सपोर्ट को ऐड कर दो, एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर को, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपेंडिचर को डिडक्ट कर दो. तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, बट अभी क्या करते हैं हम, इसको सिंपली नेट एक्सपोर्ट को ही लेते हैं, डिफरेंस को ले लेते हैं. बोथ यू विल अराइव एट सेम कंक्लूजन वेदर यू आर यूजिंग दिस मेथड और दैट मेथड. आप डायरेक्टली ऐड कर दो पहले एक्सपोर्ट को, फिर डिडक्ट कर दो इंपोर्ट को, या पहले आप नेट वैल्यू निकाल लो. सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ कंपोनेंट. नाउ let us see the steps involved. So 4 components are there in expenditure method. Expenditure method income calculate करने के लिए use करोगे आप, आपको 4 component, 4 types of different expenditure होंगे, right? तो उसके क्या steps हैं, let us see quickly. First of all, you have to identify economic units incurring final expenditure. कौन कौन से इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर. ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स आर इंक्लूडेड. सो फाइनल एक्सपेंडिचर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो होता है वो 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. बाय हाउस होल्ड सेक्टर, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट सेक्टर, expenditure by producing sector, and expenditure on rest of the world sector.
तो ये 4 कंपोनेंट होंगे। जैसे ही आप इसको ऐड करके ऐड करोगे, दैट मीन यू कैन सी क्लासिफाई किया सारे एक्सपेंडिचर को बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, राइट, इन्वेस्टमेंट एंड द नेट एक्सपोर्ट। ये 4 कंपोनेंट होंगे मेजरली, यू कैन सी दीज आर 4 components: private final consumption expenditure, government final expenditure by the government, gross domestic capital formation by both private and the government sector, right? And fourth one is net export. So sum of all these four, चारों का सम करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस चारों को ऐड करने पे मिलता है हमें पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्स माइनस एम। अभी आपको आपके पास जीडीपी एमपी आ गए। ये सेम प्रोसेस हमने देखा इनकम मेथड में और वैल्यू एडेड मेथड में भी। तो अभी क्या करना है, जीडीपीएमपी से आपको डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देना है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी डिडक्ट कर देंगे। यू विल गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट? And after getting NDPFC, next step is to find out NNPFC। तो NNPFC निकालने के लिए आपको सिर्फ ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NDPFC प्लस net factor income from abroad, you will get NNPFC, which means national income, with the help of expenditure method. So this is the process which is followed by in expenditure method while calculating national income. Okay, is this clear? Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let us quickly see the precautions of expenditure method. We will see, we will finish in this lecture only. So first precaution is on the screen. You can see expenditure on intermediate goods, right? Expenditure on intermediate goods will not be included. जो भी intermediate goods है, raw material है, semi finished good है, उसको जो है इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड इनपुट को नहीं करेंगे, वरना फिर क्या होगा, वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक वाले में काउंट करते वो अलग चीज है, जैसा कि हमने देखा भी कैलकुलेशन में ऊपर। बट जो फाइनल गुड्स अगर जो सोल्ड आउट हो गया उसके केस में आप इंटरमीडिएट का ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स पे जो हो रहा है उसको ही ऐड करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर है उसको नहीं करने वाले। Second component is transfer payment. Yesterday also we have discussed a lot about transfer payment, right? Transfer payment, one way payment for which there is nothing in return is exchange, no goods or service is involved, right? It is one way payment, and such payment are not connected with any productive activity, right? There is no value addition in this process. So this is also not included while calculating national income by expenditure method. So this is the second component, second precaution of expenditure method, right? Is this clear, students? Rahim, Asmita, Alfia, yes? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay, okay. Yes, Moving sir. on to the third precaution, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो एक्सपेंडिचर सेकेंड हैंड गुड्स के परचेज के लिए किया जाता है उसको ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। जैसा मैं पहले भी इनकम मेथड में भी देखा गया, जो भी एक्सपेंडिचर आप सेकेंड हैंड गुड्स के परचेज पे कर रहे हो नहीं होगा, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड वंस, राइट? बट यहाँ पे फिर है कमीशन एंड ब्रोकरेज जो होता है, जो अर्निंग हो गई है ना उस ट्रांजैक्शन के दौरान जो वो वाला पार्ट एक्सपेंडिचर का जो कि कमीशन एंड ब्रोकरेज के लिए गया वो काउंट हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यू गुड्स की वैल्यू के लिए स्पेंड हुआ वो वाला
काउंट नहीं होगा, अदरवाइज दैट विल लीड टू डबल काउंटिंग, राइट. नंबर फोर, फोर्थ प्रिकॉशन, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. जो जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स आप देखते हैं, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, उसका भी एक्सपेंडिचर उस पे काउंट नहीं करते, बिकॉज दैट इज मेयर चेंजिंग ऑफ हैंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन. कोई असेट क्रिएट नहीं होता है, राइट. one it is done by which is already calculated when we were discussing, investment, gross investment, gross fixed capital formation already हो चुका है. कंपनीज जो कर रहे उसी को कन्वर्ट करते फाइनेंशियल पेपर्स में, एंड दैट इज ट्रेडेड इन द शेयर मार्केट. तो उसको सेकंड टाइम थर्ड टाइम ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. दैट इज सिंपली a financial paper whose value once we have already calculated in gross domestic capital formation, right. Companies launch IPOs out of that only, right. But here also expenditure made towards commission and brokerage on the purchase of financial assets included. ये भी ये इंक्लूड हो जाता, कमीशन ब्रोकरेज हमेशा इंक्लूड हो जाता है. ये आपको ध्यान रखना है, वेदर यू आर फॉलोइंग इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. सो दिस इज योर फोर्थ precaution. Moving on to the fifth one, expenditure on account of own account production means self consumption, right. So self consumption क्या होना चाहिए, इंक्लूड होगा या नहीं होगा, क्या कहते हैं आप? इट शुड बी नहीं इंक्लूडेड. होगा. Think again, because recall what I said in case of income method also. I said, see, when you are producing goods for yourself, right, then that is value creation, value addition हो रहा है, आप produce कर रहे, farmers producing for themselves, right, vegetables, crops, there you, that is a productive activity. जब भी productive activity होती है उस पे जो expenses हो रहे हैं उसको include करना चाहिए, और इसलिए यहाँ पे include hoga. Imputed value of owner occupied houses, free services from the government, private non-profit making institutions will be included in national income, since these are productive services. जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो करते, मीन सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी अगर यूज कर रहे हैं, लेकिन वो वैल्यू एडिशन तो है. अगर वैल्यू एडिशन हो रहा है तो आप इंक्लूड कर रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल है ये. अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे फिर उसको हम, ऐसा ध्यान में रखना है आपको. सो दीज 5 आर द इम्पॉर्टेंट precautions of expenditure method. I hope that you have understood the concept, right? Yes, sir. Okay. So let me Yes, sir. this. Yes, sir.